Dear students, I'm going to present to you an example by which you will learn how we can compute probabilities in the case of the bivariate normal distribution. हम या तो marginal probabilities compute करेंगे या conditional. So let's have an example. Suppose that a statistics class takes 2 exams, exam 1 yani midterm exam and exam 2 the final exam. And let us suppose that the marks of the 2 exams to be called X and Y respectively follow a bivariate normal distribution with the following parameter values. Mu X is equal to 70 and mu Y is equal to 60. Sigma X is equal to 10 and sigma Y is equal to 15. And rho, the correlation coefficient, is equal to 0.6. Now, this is the information that is available to us. And what are the questions? We have 2 questions. The first one, what is the probability that the student scores over 75, more than 75 on exam 1? यानी midterm exam में उसके 75 से ज़्यादा नंबर हों, इस बात की probability क्या है? And the second question, what is the probability that the student scores over 85 in exam 2, that is the final exam, given that he or she scored exactly 75 in exam 1. तो आइए अब हम इन दोनों questions को बारी बारी solve करने की कोशिश करते हैं. As far as the first question is concerned, my dear students, you should realize that this is where we are dealing with the marginal distribution of X. क्योंकि देखिए जब हम सिर्फ एग्ज़ाम 1 की बात कर रहे हैं तो फिर एग्ज़ाम 2 उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं हो रहा. तो यही वो सिचुएशन है कि जब एक से हम डील कर रहे हैं तो गोया हम marginal distribution of X जिसको कहते हैं उससे डील कर रहे हैं. And you already know that in the case of the bivariate normal distribution, the marginal densities are themselves normal. और वो जो पैरामीटर वैल्यूज हैं ना X के हवाले से वही इस डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर की वैल्यूज हैं. यानी mu X is equal to 70 and sigma square X is equal to 100. यानी अगर sigma X is equal to 10, then obviously sigma square X is equal to 100. तो अब इसके बाद ये जब हमें पता लग गया तो उसके बाद हम जाहिर है कि हम इसको इस तरह लिख भी सकते हैं. As you can see now on the screen that X is distributed like a normal distribution with parameters 70 and 100. तो अब इसके बाद जो हमने सॉल्व करना है उसके लिए हम क्या करें? Very simple. Just start writing the expression of the probability that you are wanting to compute. So we are wanting to compute the probability of X being greater than 75. यही क्वेश्चन था ना कि इस बात की क्या probability है कि स्टूडेंट जो है he or she will achieve more than 75 marks. So once we've got this, then of course we have to standardize it because we are going to use the area table of the standard normal distribution. So we can write it as probability of X being greater than 75 is equal to the probability of Z or Z being greater than X minus mu X over sigma X, जो standardization का formula होता है. So that is equal to the probability of Z or Z being greater than 75 minus 70 over 10 यानी 0.5. So अब ये जो आ गया कि probability of Z or Z being greater than 0.5, this can also be written as 1 minus the probability of Z being less than or equal to 0.5. And this
this expression can also be written as 1 minus capital phi of 0.5, क्योंकि आप जानते हैं कि स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो CDF होता है उसको हम कैपिटल F से डिनोट नहीं करते आमतौर पे उसके लिए कैपिटल फाई का जो नोटेशन है वो इस्तेमाल होता है. And the moment you've got this, students, you are in a position to consult the area table of the standard normal distribution. तो जब उसके अंदर आप 0.5 के अगेंस्ट देखेंगे तो आपको क्या नंबर आपको मिलता है वहाँ पे? That number is 0.6915. दूसरे लफ्ज़ों में, the probability of Z or Z being less than or equal to 0.5, this probability is 0.6915. लेकिन हम जो सॉल्व कर रहे हैं उसमें it is 1 minus this thing. So obviously we will subtract 1 में से जब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास जो नंबर आता है यानी जो probability हमें मिलती है that is 0.3085 यानी 30.85%, or you can say 31% if you round it. And what is 31%? A little less than 1/3. So this is the answer to the first question कि इस बात का इम्कान कि एक स्टूडेंट जो है मिड टर्म एग्जाम में 75 मार्क्स से भी ज़्यादा अचीव करे. It is not too high, it is about 1/3. Let us now focus on the second part of the question. I will repeat it for you. And what is the question? What is the probability that the student scores over 85 on exam 2, that is the final exam, given that he or she scored exactly 75 in the first exam, exam 1, the midterm exam? Students, I think it should be obvious to you that now we are going to deal with the conditional distribution of y given x is equal to 75. हमने यही नाम रखे थे ना? X denotes the marks achieved in the midterm exam and y denotes the marks achieved in the final exam. तो जब हम ये कह रहे हैं कि ये हमें एक इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि स्टूडेंट ने मिड टर्म एग्जाम में 75 अचीव किए हैं तो फिर वो तो गिवन हो गया ना, दैट वैल्यू इज अवेलेबल टू अस. तो हम कह सकते हैं कि यही दिस इज द कंडीशनिंग इवेंट कि हम अब फोकस कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स पे कि जिन्होंने मिड टर्म में 75 मार्क्स अचीव किए हैं. अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि फाइनल में one such randomly selected student will score over 85. तो फाइनल के लिए हमने कैपिटल Y वेरिएबल का नाम रखा हुआ है तो फिर ठीक हो गया ना. इट इज डेफिनेटली अ केस ऑफ द कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल Y गिवन x इज इक्वल टू 75. अगर ये बात आपको क्लियर हो गई तो उसके बाद ऑब्वियसली कुछ भी और नहीं करना हमें other than to consider the PDF of the conditional distribution. And what is that PDF? As you can see now on the screen, f of y given x is equal to 1 over square root of 2 pi into sigma tilde y into e raised to minus 1 by 2 sigma tilde y square, and this entity multiplied by y minus mu tilde y whole square. और इसके अंदर ये जो मैंने अभी कहा sigma tilde y is equal to what? It is sigma y into square root of 1 minus rho square. And what is mu tilde y? It is mu y plus rho into sigma y over sigma x multiplied by x minus mu x. तो अब हम क्या करेंगे? Obviously, वो सारी जो numerical values हमें available हैं for our 5 parameters, we will substitute them
in this PDF. So आपके सामने ये मैंने कर दिया। वो आप देख सकते हैं कि हर जो पैरामीटर उसके अंदर है उनकी वैल्यूज़ उसके अंदर हमने डाल दी हैं। म्यू एक्स इज इक्वल टू 70, म्यू वाई इज इक्वल टू 60, सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 10, सिग्मा वाई इज इक्वल टू 15 एंड रो इज इक्वल टू 0.6। ये डाल चुकने के बाद जाहिर है कि हम उसको ज़रा सिंप्लीफाई कर देंगे, और सिंप्लीफाई करने के बाद माय डियर स्टूडेंट्स, what is the final version that we get? It is in front of you and I will read it for you. F of y given x is equal to 1 over 12 into square root of 2 pi into e raised to minus 1 by 2 into 12 square, 144, and this entity multiplied by y minus, जो माइनस होना है वो एक लंबा एक्सप्रेशन है, आप जानते हैं, एंड व्हाट इज इट, 60 प्लस 0.9 इनटू x माइनस 70, और इस पूरी चीज़ का होल स्क्वायर। तो आपने देखा कि सारी चीज़ें नंबरों में तब्दील हो गई हैं, मगर y भी है उसके अंदर, बिकॉज ऑब्वियसली y ने तो होना ही है। इट इज़ द कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y गिवन x, तो x है वहाँ पे। तो अब once we've got this expression, now we are going to put the numerical value of x. हमें क्या कहा गया था कि कौन से स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, वो वाले जिन्होंने मिड टर्म में 75 मार्क्स अचीव किए। So therefore it's very simple, just put x equal to 75 in this expression. So as soon as you do that, my dear students, what do you get? Now you simplify and you get the simple equation. F of y given x equal to 75 is equal to 1 over 12 into square root of 2 pi into e raised to minus 1 over 2 into 12 square multiplied by y minus 64.5 whole square. So it is obvious that for this particular conditional distribution, the mean of this distribution is 64.5 and the standard deviation is 12. Once you've got these two, now you are in a position to consult the area table after the process of standardization. क्योंकि वो standardize करके ही जाहिर है आप area table की तरफ जाएंगे। स्टैंडर्डाइजेशन ही के लिए आपको मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन की न्यूमेरिकल वैल्यूज चाहिए थी, अब वो आपको अचीव हो गई हैं। सो लेट अस स्टार्ट। what probability are we wanting? As you can see on the screen, we are talking about the probability of y being greater than 85 given that x is equal to 75. So this is the same as the probability of z or z being greater than y minus 64.5 over 12 given that x is equal to 75. और अब y की वैल्यू पुट कर दें जो 85 जो है, so z being greater than 85 minus 64.5 over 12 given that x is 75. तो अब इसको सॉल्व करें तो क्या नंबर हमें मिलता है? 85 minus 64.5 over 12, it is equal to 1.71. So probability of z being greater than 1.71 is the same as 1 minus the probability of z being less than or equal to 1.71. So this can also be written as 1 minus capital phi of 1.71. And now we look into the area table, और 1.71 के अगेंस्ट जो नंबर हमें मिलता है, यानी जो probability हमें नज़र आती है, that number or that probability is 0.9564. 1 में से इसको माइनस कर दें तो क्या हमें मिलता है? 0.0436 or 4.36%.
So 4.36% is quite a quite small probability. It is even a little less than 5%. तो फाइनल नतीजा क्या निकला? हमने ये कंक्लूड किया कि it is quite unlikely that a student who scored 75 in the midterm exam will be scoring more than 85 in the final. This is an example of computation of probabilities in the case of the bivariate normal distribution.